મહારાષ્ટ્રની એકનાથ શિંદે સરકારે ગયા વર્ષે લંડનના મ્યુઝિયમમાંથી છત્રપતિ શિવાજી મહારાજના વાઘ નખને પરત લાવવા માટે કરાર ઉપર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા। હવે મહારાષ્ટ્રના ઇતિહાસકાર ઇન્દ્રજીત સાવંતે દાવો કર્યો છે કે શિવાજીના વાઘ નખ જે લંડનથી લાવવામાં આવી રહ્યો છે તે અસલી નથી। જોકે આ દાવો રાજ્ય સરકારે નકારી કાઢ્યો છે। એટલું જ નહીં, ઇન્દ્રજીત સાવંતે દાવો કર્યો હતો કે અસલી વાઘ નખ હજુ પણ મહારાષ્ટ્રના સતારા જિલ્લામાં છે। ઇતિહાસકારે લગાવેલા આરોપ બાદ હવે ફરી એકવાર એને લઈને રાજનીતિ અને પ્રતિ આક્ષેપોનો દોર શરૂ થઈ ગયો છે। આપને જણાવી દઈએ કે ઇન્દ્રજીત સાવંત એવા પ્રથમ વ્યક્તિ નથી જે વાઘ નખ ઉપર સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે। આ પહેલા પૂર્વ મંત્રી અને શિવસેના नेता आदित्य ठाकरे पण कथित वाघ नखनी विश्वसनीयता पर सवाल उठावी चुक्या छे। असा दावा केलेला आहे, नेमकं काय सत्य आहे? छत्रपती शिवाजी महाराज हा जगातल्या साऱ्या शिवभक्तांसाठी अभिमानाचा, आस्थेचा, गर्वाचा विषय आहे की या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या महाराष्ट्राच्या भूमीमध्ये राहतो। जेव्हा राज्याभिषेकाचं 350वं वर्ष सुरू झालं तेव्हाही याच सन्माननीय सदस्यांनी असा भ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला की हे 350वं वर्ष नाही, 10 लोक बसवून पूर्ण कालावधीमध्ये एकदा नव्हे तर 10दा मोजण्यात येऊन 350वं वर्ष हे 2 जूनला तिथीनुसार आणि 6 जूनला तिथीनुसार 2023 ला सुरू झालं। कारण नसताना वाद निर्माण करायचा, कारण नसताना प्रश्न उपस्थित करायचे। जेव्हा सभागृहात मी निवेदन केलं तेव्हा खरं तर कान बंद करता येत नाही, डोळे बंद करता येतात, पण तेव्हा प्रश्न उपस्थित केला नाही आणि गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न केला। 5 नोव्हेंबर 2022 रोजी जेव्हा प्रस्ताव आला की अफजल खानाच्या कबरीचं अतिक्रमण हटवण्याची मागणी ही 29 जुलै 1953 पासून शिवभक्त करताय आणि दुर्दैवाने मागच्या सरकारने, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सरकारने अफजल खानाच्या कबरीचं अतिक्रमण नियमानुकूल करावं असं 5 मे 2008 ला ठरवलं। पण हे आमच्या महाराष्ट्राच्या जनतेचं सौभाग्य होतं की नियमानुकूल करण्यासाठी लागणारी कागदपत्र त्या अफजल खानाच्या कबरीचं उदात्तीकरण करणाऱ्या संस्थेनी ते दिलीच नाही आणि 5 वर्षामध्ये ती कागदपत्र न दिल्याने तो प्रस्ताव पूर्णपणे व्यपगत झाला होता आणि त्याचा योग्य उपयोग करत 10 नोव्हेंबरला 2022 ला महाशिवप्रताप दिनी अफजल खानाच्या कबरीचं अतिक्रमण हटवण्यात आलं। अनेक शिवभक्तांनी मग दाखले दिले। शिवभक्तांनी सांगितलं की लंडनच्या म्युझियम मध्ये असणारे वाघनख, ज्या वाघनखाचा बॉक्स हा 1875 मध्ये केला होता, जो बॉक्स त्याचं चित्रही आपल्याकडे आहे आणि या बॉक्सवर दी वाघनख ऑफ शिवाजी विथ विच ही किल्ड द मोगल एम्परर। इथंच थांबलं नाही, या संदर्भातला जो पत्रव्यवहार हा पंतप्रधान। ઇતિહાસકારના આરોપોનો જવાબ આપતા મહારાષ્ટ્રના મંત્રી સુધીર મુનગંટીવારે કહ્યું હતું કે કોઈએ એવો દાવો કર્યો નથી કે લંડનથી લાવવામાં આવેલ વાઘ નખ અથવા વાઘના પંજાના આકારનું હથિયાર છત્રપતિ શિવાજી મહારાજનું હતું। લંડનના વિક્ટોરિયા અને આલ્બર્ટ મ્યુઝિયમમાંથી મહારાષ્ટ્રમાં આ હથિયાર લાવવા માટે સરકારે કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચ કર્યો હોવાના દાવાને પણ મુનગંટીવારે ફગાવી દીધો હતો। તેમણે કહ્યું કે પ્રવાસ ખર્ચ અને કરાર ઉપર હસ્તાક્ષર કરવા પાછળ 14.8 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે। સાંસ્કૃતિક બાબતોના પ્રધાને ગૃહને જણાવ્યું હતું કે વાઘ નખને યોદ્ધા રાજાના વંશજોની હાજરીમાં જ 19મી જુલાઈના રોજ સાતારામાં સરકારી મ્યુઝિયમમાં પ્રદર્શિત કરવામાં આવશે। તેમણે કહ્યું કે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ એક આદર્શ શાસક અને બધા જ માટે પ્રેરણારૂપ હતા। એમ નોંધનીય બાબત એ છે કે જ્યારે મહારાષ્ટ્ર સરકારે લંડન મ્યુઝિયમમાંથી લાવવામાં આવેલા વાઘ નખ અંગે
GR એટલે કે સરકારી નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું હતું ત્યારે સરકારે તેને અસલી વાઘ નખ હોવાનું જાહેર કર્યું હતું અને હવે આ વિવાદ વધી રહ્યો છે। મંત્રી સાહેબ તેને ટાળી રહ્યા છે। आपने दावा किया है, क्या सत्य है पूरा? मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ। जिस संग्रहालय में लंदन में वाघ नख है, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम, उनके डायरेक्टर का पत्र मुझे आया हुआ है और उसमें उन्होंने बताया है कि ये जो वाघ नख है, ये वाघ नख शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारते वक्त यूज़ नहीं की हुई है। ये डायरेक्टर बोल रहे हैं, जिस जहाँ से वो ला रहे हैं, वो जो चीज़ ला रहे हैं, वाघ नख ला रहे हैं, उसके संग्रहालय के डायरेक्टर बोल रहे हैं। और ये मैं पहली बहुत बार बता चुका हूँ कि सातारा में शिवाजी महाराज की असल वाघ नख है, सातारा छत्रपति के पास है। और महाराष्ट्र शासन जो है ये जनता की, शिव प्रेमियों की दिशा भूल कर रहे हैं और बार बार असत्य बोल रहे हैं कि ये वाघ नख जो शिवाजी महाराज के है। अभी इस पर आपने इसे इस पत्र व्यवहार के बाद शासन से कुछ बात की है क्या? जो सुधीर मुनगंटीवार है, इनसे आपसे कुछ बातचीत हुई है क्या? जब मुझे पहले मार्च महीने में ही विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम का पत्र आया हुआ था, उस वक्त से आज तक मैं शासन को पत्र लिख रहा हूँ, कंसर्न मंत्री को लिख रहा हूँ, मुख्यमंत्री को लिख रहा हूँ और कंसर्न अधिकारियों को भी लिख रहा हूँ कि इसके बारे में आप खुलासा कीजिए। लेकिन कोई भी खुलासा, एक पत्र मुझे सिर्फ पुरातत्व खाता का आया था, उसमें भी उन्होंने शिवाजी महाराज की वाघ नख है इसका कोई भी एक भी पुरावा मुझे नहीं दिया है और वो गोलमाल ऐसे उत्तर दे रहे हैं। अभी आपकी मांग क्या है? क्या आप सरकार की तरफ से मांग कर रहे हैं? मेरा कहना है कि इसके बारे में आप स्पष्टीकरण कीजिए। आप कोट्यावधि रुपए आप खर्च कर रहे हैं इसके बारे में यहाँ पे डिस्प्ले के लिए, और वो भी ला रहे हैं, वो कायम स्वरूपी नहीं ला रहे हैं, वो लोन ले आ रहे हैं 3 बरस के लिए, उसके लिए भी 30-30 कोटी रुपए खर्च कर रहे हैं। क्या चल रहा है? शासन को इसके बारे में शिवाजी महाराज के इतिहास जो है प्रदूषित नहीं होना चाहिए, उसमें वाद नहीं आना चाहिए, इसलिए उन्होंने इसके लिए स्पष्टीकरण देना चाहिए। सांस्कृतिक मंत्री ने स्पष्टीकरण देना चाहिए। अगर सांस्कृतिक मंत्री नहीं देना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री ने स्पष्टीकरण देना चाहिए और शिवप्रेमी और तमाम भारतीय लोगों को ये बताना चाहिए कि शिवाजी महाराज के बारे में हम असत्य नहीं बोलते। તો ઇતિહાસકારના આરોપ પછી હવે શિવસેનાના નેતા અને પ્રવક્તા આનંદ દુબેએ કહ્યું છે કે મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય સરકાર એવું કહીને વાઘનખને ભારતમાં લાવી રહી છે કે તે એ જ વાઘનખ છે જેનો ઉપયોગ છત્રપતિ શિવાજી મહારાજે કર્યો ન હતો। આ વાત સાથે સંમત છીએ કારણ કે આપણા નેતા આદિત્ય ઠાકરે કહી રહ્યા છે કે આ વાઘનખની સંપૂર્ણ તપાસ થવી જોઈએ। હવે ઇતિહાસકાર ઇન્દ્રજીત સાવંત પણ આના ઉપર સવાલો ઉઠાવી રહ્યા છે। હવે ભાજપે વિચારવું પડશે કે શું સાચું અને શું ખોટું। सर्वोच्च न्यायालयातले न्यायमूर्ती चंद्रचूडजी सुद्धा त्या महात्मा गांधींना अभिवादन, नमन, वंदन करण्याच्या कार्यक्रमात होते आणि 3 आणि 4 ऑक्टोबर 2च दिवस मी होतो। 5 ऑक्टोबरला तिथून निघालो, पण मला एक लक्षात आलं नाही की संवेदनशील नेत्याकडून काही नेत्यांचा प्रवास इतक्या कमी वयात सराईत नेत्यांचा मार्गाने का होतोय आणि पुढे इतके कार्यक्रम जेव्हा केले। वाघनखाची घोषणा ही साधारणतः मागच्या 2022 मध्ये जेव्हा शेकडो शिवभक्तांनी मागणी केली, निवेदन दिले की या म्युझियम मध्ये हे जे वाघनख आहेत हे आणले पाहिजे, त्यानंतरचा हा पत्रव्यवहार अतिशय सुस्पष्टपणे केला गेला आहे। पण या संदर्भात तेव्हा आक्षेप न घेता आता काहीतरी शब्दच्छल करायचा। विधानसभेत अतिशय स्पष्ट शब्दात मी सांगितलं की इतर कोणतेही वाघनख कुठेही कोणत्याही म्युझियम मध्ये असतील तिथं कुठेही अशा पद्धतीचा स्पष्ट उल्लेख केलेला नाही। कोणत्याही 18व्या शतकातल्या वर्तमानपत्रामध्ये बातमी आली नाही। फक्त जे वाघनख आपण आणतोय त्याचाच हा बॉक्स आहे 1875 मधला, ज्यामध्ये द वाघनख ऑफ शिवाजी विथ विच ही किल्ड द मोगल एम्परर असं जे म्हटलं आहे ती एकच डब्बी आणि एकच वाघनख आहे। म्हणून याच्यावर
इतक्या संवेदनशील विषयामध्ये कारण नसताना वाद घालून या महाराष्ट्राच्या भूमीचा अवमान करण्याचा प्रयत्न कोणीही करू नये। जर एखाद्याकडे काही दुसरे पुरावे असतील तर ते पुरावे किंवा त्यांच्याकडे जास्तीची माहिती असेल तर विभाग त्यांची माहिती तपासून निश्चितपणे घेईल। नाही, हे मला माहित नाही। हजारो इतिहासकार आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा ऐतिहासिक संशोधन करणारे हजारो आहेत, मग त्याच्यापैकी कोणीच का केला नाही? आणि ज्यांनी हा वाद निर्माण केला ते जर इतिहासकार आहे तर त्यांनी सरकारसोबत मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन त्यांच्याकडे असणारे दाखले देण्याची आवश्यकता होती। पण त्यांनी दाखले न देता फक्त वाद निर्माण करायचा। 30 कोटी रुपये खर्च होतो आहे, मी सांगितलं 14,08,000 रुपये फक्त खर्च झाला। कधी म्हणायचं भाड्याने आणले जात आहे। याच्यामध्ये निश्चितपणे काहीतरी अभ्यास न करता राजकारण करणे एवढाच भाग दिसतोय। यांना बघू मी आपल्याला पुन्हा सांगितलं, हे 1875 मध्ये बसलेला बॉक्स आहे। त्याच्यामध्ये वर्तमानपत्रामध्ये त्याचे उल्लेख आहे। आता याच्या संदर्भामध्ये इतके स्पष्ट उल्लेख आहे। आपल्याकडे कोणता दुसऱ्या वाघनखाबद्दल उल्लेख असेल, एखादी 1875 मध्ये